topic, nature of roots of quadratic equation. We know the general equation of quadratic, the general equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Then we consider the what is the nature of roots of this equation. For finding the nature of roots, first we find b square minus 4ac. b square minus 4ac. First we find b square. It is called discriminant. Discriminant. It is called discriminant. We find the value of b square minus. Actually, b square minus 4ac tell us what is the nature of roots. For example, if the first case, if b square minus 4ac is greater than 0, means its value is positive and greater than 0, the roots of equation are real and distinguished, or different roots. Same way, second case, if b square minus 4ac is equal to 0, the value of discriminant is equal to 0, the roots of equation are real and equal. Both value of x here, the both value of x are equal. In this case, the roots are real and equal. And third case, we have if b square minus 4ac less than 0, or the value of discriminant is in negative, so the roots of equation are imaginary. Then imaginary roots. The roots of equations are imaginary roots. In this case, we are not solve it. For example, हम एक question लेते हैं. Suppose कीजिए we have x square plus x minus 6 is equal to 0. What is the root of this equation? So we compare it, comparing with ax square plus bx plus c. तो बेटे यहाँ से a is equal to 1, b is equal to 1 और c is equal to minus 6. a coefficient of x square, b coefficient of n, c constant n. Then b square minus 4ac. If we find value of b square minus 4ac, so it is b square यानी 1 का square minus 4a into minus c. Then we have 1 minus minus plus 24 and it is 25. So discriminant is greater than 25 is greater than 0. 25 is greater than 0 means बेटे ये वाली condition आ गई. 25 is greater than 0. तो roots are real and different. So this is the way we find the nature of roots. For nature of roots, we find b square minus 4ac, it is called discriminant. If value of b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are real and different. But if b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are real and equal. Yani both value of alpha and beta both are equal. If b square minus 4ac is less than 0, then roots are imaginary. In class 10th, we have not solved this equation. We just write the roots are imaginary. Imaginary roots को हम solve करते हैं बेटे 11th class में, जब हम complex number को पढ़ लेते हैं तब हम इसे solve करते हैं. So this is the way to find the nature of roots of quadratic equation. Thank you. So student, today we learn how to use quadratic formula for solving quadratic equation. We know the general equation is ax square
plus bx plus c is equal to 0. It is a general quadratic equation having a two roots. The value of roots x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. It is called quadratic formula. इसको हम quadratic formula बोलते हैं. It is called quadratic formula and also known as Shridharacharya formula, also known as Shridharacharya formula. अब बेटा how can we apply this formula? इस formula को कैसे apply करते हैं? Suppose we have a question 2x square minus 5x minus 4 is equal to 0. Find the roots of equation up to 3 decimal place. In ICSE he asked the up to 3 decimal place. CBSE में आपको सिंपल सॉल्व करना होता है बेटा, उसमें ऐसा नहीं लिखा होता, कुछ भी मेंशन नहीं होता. अगर मेंशन हो तो सबसे पहला काम होगा टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. सबसे पहले आप इसका b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कीजिए. तो कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन. So here when we compare it with general equation, a is equal to 2, b is equal to minus 5 and c is equal to minus 4. c is equal to minus 4. Then the discriminant b square minus 4ac, ये बराबर किसको हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा minus 5 का स्क्वायर minus 4 into 2 into minus 4. It is 25 minus minus plus 32 and it is 57. So 57 discriminant is greater than 0. So the roots are real and different. Roots are real and different. तो बेटे यहां से हम अब x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Yeah, now put the value of value here. Minus b to minus 5 to minus 5 plus minus under root, and the value of discriminant is 57. So it is 57 upon 2a. A is equal to 2. So now it become 5 plus minus under root 57 upon 2. X is equal to 4. ये x का वैल्यू है. अब for finding the value of 57 we use, हम इसके लिए यूज करते हैं बेटे अपना टेबल यूज करते हैं. आपकी बुक्स में अब अगर ML अग्रवाल है तो उसके एंड में आपको दे रखा है टेबल. और 57 का स्क्वायर रूट देखेंगे हम. 57 का स्क्वायर रूट देखेंगे हम. जैसे यहां पर है मेरे पास 57 का स्क्वायर रूट 0 पे 7.550. ये बेटे है. अगर 57.1 होता तो फिर यहाँ देखते, 57.2 होता तो यहाँ पर देखते. ये देखिए यहाँ पर 1 2 3. अगर 57.1 होता, 57.1 होता तो यहाँ देखते. अभी हमने 57 के बाद कुछ नहीं, तो 57 का 0 पर देखेंगे तो 7.55. तो वी यूज द रूट्स इन प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या कितना आया था 7.550 अपॉन 4. It is value of 57 का वैल्यू है 7.550. Then the value of x, यहाँ से x की दो वैल्यू लेंगे बेटे. एक 5 प्लस 7.550 अपॉन 4 और 5 माइनस 7.550 अपॉन 4. It become x is equal to 12.550 अपॉन 4. और यहाँ से बेटे 7 में से 5 लेस हो जाएगा तो माइनस का 2.550 upon 4. Now divide it. 4 3 जा 12, 0.4 1 जा 4, 4 1 यहाँ गया बेटे. 4 3 जा 12, 12 और 3 4 3 जा 12 और 3 बचा 4 7 जा और 4 5 जा 28. Again here minus 0.4 से डिवाइड किया. 4 6 जा 24 यहाँ गया. 4 3 जा 12,
3 बचा 0, 4 7 जा 28 और 4 5 जा। अब ही से दैट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो बेटे 1 2 3 यहां तक हमें आंसर लेना है, तो x इज इक्वल टू 3.13, और बेटे ये 5 से बड़ा है तो ये आगे राउंड अप हो जाएगा 3.8, और यहां पर ये भी 5 से बड़ा तो ये आगे राउंड अप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -0.638, ये आपका आंसर हो गया। कई बार वो बोलता है इन डेसिमल प्लेस की जगह वो बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर, इफ he ask up to 3 significant figure उस केस में हम क्या करेंगे बेटे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां से हो जाएगी, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3.1, और इसे राउंड अप करेंगे, ये 7 है 5 से बड़ा तो ये हो जाएगा 4, एंड यहां से सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आएंगे तो -0.3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला 1 2 3, तो यहां पर ये हो जाएगा 638, यहां का आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला